Good morning, everyone. I request you all to kindly rise up from your seat to welcome our chief guest. Thank you. Now I would like to request our team to escort the dignitaries to the dais. May I now request everyone, our technical team to please play this national anthem. Thank you. With the permission of our Honorable Governor, who is also our chief guest for today's event, I would like to start with today's program. A very good morning to our Honorable Governor, Shri Lakshman Prasad Acharya Sir, Honorable Health Minister, Shri Kunga Nima Lepcha Sir, Shri K.B. Gurung Sir, Advisor Health, Shri Shrikant Naramuni Sir, Founder Chief Technology Officer, Aadhaar, and Chairman of 10BedICU Project, Ma'am Sunita Naramuni, ex-Global Head of Social Innovation and Dell Technologies and Chairperson of RGM, Shri Kaushik Sharma, Zonal Head HDFC Bank, Secretary to the Governor, Dr. A.B. Karki Sir, Secretary, Department of Health and Family Welfare, Dr. Ruth Johnson Ma'am, dignitaries on the dais, Head of all departments, doctors, nursing superintendents and nursing officers, officers and staffs of Department of Health and Family Welfare, principal faculty and students of Sikkim Government College of Nursing, and everyone present here this morning. I, Anusha Pradhan, faculty at Sikkim Government College of Nursing, welcome you all to the inaugural ceremony of the 10BedICU project. To begin with today's program, we would like to start with the felicitation of our Honorable Governor, Honorable Health Minister, and dignitaries on the dais by the offering of khadas and bouquets. And for this, I would like to request Dr. A.B. Karki Sir, Secretary, Department of Health and Family Welfare, to kindly felicitate our Honorable Governor Sir. Next, I would like to thank you, sir. Next, I would like to request, sir, to kindly felicitate our Honorable Health Minister, sir. I would also like to request, sir, to felicitate Shri K.B. Gurung, sir, Advisor to Health, Department of Health and Family Welfare, Government of Sikkim. Thank you, sir. Next, I would like to request Dr. Ruth Johnson, Ma'am, Medical Superintendent, STNM Hospital, to felicitate our dignitaries on the dais. Shri Shrikant Naramuni Sir, Founder, CTO, Aadhaar, and Chairman of 10BedICU Project.
Ma'am Sunita Naramani, ex-Global Head of Social Innovation and Dell Technologies. I would also like to request ma'am to felicitate Shri Kaushik Sharma, Zonal Head of HDFC Bank. Thank you, ma'am. To start us off on an auspicious note, we will now have the lamp lighting ceremony. Ladies and gentlemen, to do the honors, I request our Honorable Governor Sir, Honorable Health Minister Sir, followed by the dignitaries on the dais, to join us in a time-honored tradition of lighting the inaugural lamp. Thank you all. Next, I would like to request Dr. A.B. Karki Sir, Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Sikkim, for the welcome address. Good morning, everyone. आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय, सिक्किम सरकार के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को हम सभी स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग एवं गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की तरफ से जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड टू मेनी अदर डिपार्टमेंट्स, ऑनरेबल श्री कुंगा निमा लेप्चा साहबलाई पनि स्वागत गरिदिनु होला। साथसाथै हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रै विभागीय एडभाइजर महोदय श्री केबी गुरुङ सर, उहाँलाई पनि हामीले स्वागत गरौँ। We have
With us, a very eminent personality, a tallest man in India in terms of technological innovation and reaching out to the rural masses with a very cheap kind of technology availability mission. I am very fortunate enough to stand before him and all of us on behalf of Health and Family Welfare Department, Government of Sikkim. Let's welcome Mr. Srikant Nadamani. We have with us Madam Sunita Nadamani also. Please welcome her as well. Similarly, you are all aware about our 10-bedded TeleICU inauguration today. For that, we have our sponsors as well. And with us today, we have Sri Kaushik Sharma, Zonal Head, HDFC Bank. We'd like to welcome you, sir. We have with us our own medical superintendent, Madam Ruth, and her colleagues from the STNM, and all the doctors and the CMOs who have come all the way from various districts. Welcome to all of you. We have with us Madam Bisoya, Program Director, e-governance. Madam is there? She couldn't join today. Anyway, we have with us our own daughter, Baini Sarita Limbu, who has worked out so much with regards to implementation of this project in the state of Sikkim. Baini Sarita Labin Tamale Swagat Gardinola. We have with us similarly Mr. Sunil Subba, who was looking after IT. We have with us Mrityunjay Nath. We have with us Chakravan Kakote. And also we have with us Dr. Gyamso and Dr. Asim Basnet will be joining us from the respective district. We are missing one personality here today, and he is Vinod Khosla, who is a venture capitalist and a very renowned personality who is really after funding this program. He is a man whose net worth is 5.4 million US dollar, and who has really helped a lot in establishment of this TeleICU in the state of Sikkim. This project basically जो आज का हम इनाग्रेट करने जा रहे हैं, इसका नाम है 10-bed TeleICU. इसका उद्देश्य क्या है कि बेसिकली हमारे स्टेट में STNM हॉस्पिटल में हमारा बहुत ही अच्छा ICU सेंटर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में उतने अच्छे ICU सेंटर्स नहीं हैं. इसके लिए जो भी पेशेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ICU में एडमिट हो जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट कैसे किया जाए विद द लेटेस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कैसे किया जाए. इसके लिए हमारा गैप था, बिकॉज वी हैव टू ट्रैवल लिटिल बिट ऑफ अ डिस्टेंस. 6 जिलों से गैंगटोक आने में समय लगेगा. इसके लिए ई-गव फाउंडेशन ने ये बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया और हमारे STNM हॉस्पिटल को एक सेंटर बना के हमारे गांव में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट के ICU के साथ जोड़ दिया, ताकि जो भी हमारे गांव के ICU में पेशेंट जाते उनको यहीं हमारे STNM के ICU से सीधा ट्रीटमेंट थ्रू TeleICU के माध्यम से मिले. अब ये सुविधा हमारे पास अवेलेबल है और लोगों ने इनका फ़ायदा भी उठाना चालू कर दिया है. इसके लिए फिर जोरदार से हम ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहते हैं. हमारे ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन basically was started by two tallest personalities at a global state. They were from India, but they were working abroad as well. So these two personalities were Dr. Nandan Nilekani. If you have read a book, Imagining India, there you'll see him. And another personality who founded e-government foundation was
our own Srikant Nadamani sir, who is present right in front of you. Uh, this program is successfully running in various states, and Sikkim is one of them. And e-government foundation has been able to penetrate down to many, more than 16 states, many towns, cities, and the rural areas. Sir Srikant Nadamani, he's educated from Louisiana State University in the US. Then he worked with Silicon Valley, California, and from Silicon Valley today he has come to Sikkim for us and for our own people. So again, Sir Srikant Nadamani here with us today. We are so fortunate to have you. He is a man behind Aadhaar. Aadhaar को जुन चाहिँ तपाईहरुले हामी खिच्दै छ नि, यो चाहिँ उहाँले बनाएको भन्दा हुन्छ। त्यस्तो मान्छे। अनि तपाईहरुको यो अस्ति कोभिड को टाइममा रिमेम्बर दैट वी यूज्ड टु गेट कोभिड टेस्ट गर्ने बित्तिकै सर्टिफिकेट आइहाल्थ्यो नि, प्राइम मिनिस्टरको फोटो भएको वही हो। सबै ब्रेन चाइल्ड. So basically such a big personalities, you know, they have been helping our state, and we are very fortunate to have all the latest technology in the state of Sikkim for the benefit of our local people. We have with us today Madam Sunita Madamani again. She is also a very tallest figure. Maybe she has an appointment with Bill Gates tomorrow or day after. So they'll be chatting over our state of Sikkim's technology and advancement with him. And I think the good message will also go from here. अब हामी चाहिँ सानो टेबलमा बस्छौँ नि, उहाँहरु चाहिँ बिल गेटहरुसँग कोसँग बस्छ है, हामी चाहिँ अब त्यस्तो सारो सानो छ नि त, सानो ठाउँमा है, त्यस्तो उहाँले आएर हामीलाई चाहिँ मद्दत गर्नु कोसिस गर्नु हुँदैछ। त्यसको कुरा मात्र तपाईहरुलाई मैले जानकारी दिएको है। अर्को पर्सनालिटी which we are missing today is Vinod Khosla. I told you is a millionaire, तर उहाँले हेल्प गरिरहनु भएको छ, आज आउन सक्नु भएको छैन। साथसाथमा हाम्रो अर्को अर्गनाइजेसन पनि छ, यहाँलाई बहुतले हामीलाई मद्दत गरेको छ, उहाँहरु सबैको नाम मैले लिन सकिन र अन्तमा तपाईहरु सबैजनालाई आज यहाँ आइदिनु भएको छ, तपाईहरुले यसको महत्त्व बुझेर। And finally my honorable governor sir, he arrived Gangtok last night at 8:30 PM. राति आएर रेस्ट पनि छैन, आएर यो इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम्स को लागि today we have to thank him for inaugurating our जन औषधि केन्द्र एउटा उहाँले गर्नुभयो। अर्को we have to thank him for inauguration of 10-bed Ayush hospital in the state of Sikkim, first ever Ayush hospital. And the third चाहिँ यो 10-bedded हाम्रो TeleICU, right? उहाँलाई बहुत बहुत धन्यवाद र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। अनि जति पनि तपाईहरु आउनु भएको छ, फेरि यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत गर्दै मेरो स्वागत भाषण यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you, sir, for your pleasing words. As we move ahead with today's program, I would like to draw your attention to a video which will be played on the screen by our technical team, which will highlight the details of the 10-bed ICU project, providing insight into its facilities, impact, and contribution of the government of Sikkim in materializing the project. Can we have the video, please? In the heart of the eastern Himalayas lies Sikkim. Beneath its mesmerizing beauty hides a critical challenge. Approximately 80% of Sikkim's population resides in rural and hard-to-reach areas. The Sikkim government, under the leadership of our Honorable Chief Minister Shri Prem Singh Tamang, has been tirelessly working to overcome the challenges of accessibility to critical care services in these remote regions. The 10-bedded ICU project is revolutionizing critical care. By leveraging technology and data-driven approaches, we are poised to enhance the efficiency
and responsiveness of our critical care system. An innovative private-public partnership project between the Department of Health and Family Welfare, Government of Sikkim and E-Government's Foundation, an MOU was signed on August 6, 2021 to launch the 10-bed ICU project. Conceived by Mr. Shrikant Nandhamuni, founding CTO of Aadhaar, it has since evolved into a comprehensive system strengthening project spanning across 9 states. We mostly cater to the populations from the rural areas. So most of the people, they cannot afford treatment in higher facilities. Some people, they come from very, very far off places. So it almost takes them 1 or 2 days to reach to district hospital only. And when in case there are referral, it will take almost 4 hours, 5 hours to reach STNM. And you can imagine what would be the condition of the patient in an ambulance in critical stage for more than 5 hours. In North Sikkim, we have a lot of catastrophe. Just recently, we had the glacial lake outburst. Timely referral and timely management is one of the most important criteria in patient management. So ICU would be a blessing in disguise to the people of North Sikkim. The 10-bed ICU project in Sikkim is overseen by a project management unit led by the Secretary of Health. It aims to bridge these gaps of accessibility through its 5 intervention pillars. I was working with the COVID ICU during the pandemic, during the peak of the Delta wave. And that was when eGov provided us with all this equipments. It really did help people during that time. We were treating severe COVID patients out there. Mostly the cardiac cases, respiratory cases, those coming with shortness of breath, respiratory distress, they will be benefited. Even the poisoning cases can also be benefited. Monthly referrals number of patients has remarkably decreased now. So if we had to refer 10 patients in a month, now it has decreased to only 2 to 3 patients. To address the shortage of specialists, the 10-bed ICU project, in association with the Sikkim government, has set up the TeleICU hub, connecting all the ICU wards at district hospitals in Singtam, Namchi, Gyalshing, Mangan and Rhenock to a centralized hub at the prestigious STNM Hospital in Gangtok. The TeleICU initiative would help the state in improving the overall healthcare services. If there's any emergency, they can come directly to district hospital in Singtam. We'll be providing all the facilities of ICU, and if needed, we can connect with the STNM Hospital also. This Department of Anesthesiology is going to play the critical role in the delivery of the services. We can save time and manpower by giving our expert opinion regarding any intervention that is required in need of any critical care. CARE, UN-recognized 58 digital public good, has been deployed as a digital solution for healthcare resource optimization. CARE enables storage of EMR, including details of medication, investigative reports. Since CARE is also AVDM compliant, it empowers patients to share their health records with other AVDM compliant systems. CARE is what makes our ICU tech-enabled by integrating the different devices and facilitating doctors-to-doctors consultation. It also integrates all the 5 waveforms from the 5 parameters, which helps us to track the progress and the condition of the patient. In case of an emergency, we can log on to our phones, and with the help of the CARE app, we can access the data, the condition and the progress of our patients at any time, anywhere using our mobile phones. 10-bed ICU project dashboard provides comprehensive data that simplifies the monitoring process and helps in unified decision making. This will drive evidence-based policy making, ensuring that our strategies are grounded in real-world outcomes and data-driven insights. Training and capacity building of our doctors and nurses is a core component of the project. We provide training on equipment and technology, also certification courses on critical care in collaboration with medical colleges and universities. We are thrilled to embrace the challenges that come with our role as the central hospital, dedicated to supporting and coordinating training efforts. Our goal is to build and enhance the capacity of the state health staff, ensuring they are fully equipped to deliver quality critical care.
rigorous training on effective use of care technology platform, hands-on session on TeleICU consultation and refresher sessions for care are also organized. Communitization fosters local empowerment and ownership, ensuring the project's sustainability. It optimizes resource utilization and catalyzes equitable access and long-term viability of the project. We will work closely with the government to strengthen the Rogi Kalyan Samiti so that the most needy have easy access to the facility and the qualities of ICUs are maintained and upgraded over time. This project will help in ensuring that our patients no longer need to be transferred to distant facilities during the golden hour. Now, high quality treatment will be available within each district, bringing healthcare closer to our people and reducing out-of-pocket expenses. ICU को सुविधा सबै यहीँनेरि नै छ अनि जति चाहिँ पनि बिमारलाई चाहिने इन्स्ट्रुमेन्टहरु छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै हामीलाई फाइदा छ सुविधा छ सो हाम्रो एक्सपिरियन्सहरु नै हामीले पेशेन्टमा युटिलाइज गर्न सक्छ पेशेन्टको केयर दिन सक्छ एकदम खुसी लाग्दैछ हामीलाई पेशेन्ट्सलाई पनि केही प्रब्लम हुँदैन I think we all should be proactive, help each other in helping the people of Sikkim. This is a very philanthropic, a very nice gesture to make the lives of people easy. I'd like to thank Government of Sikkim for taking all efforts and going all out in ensuring better healthcare system, especially for the poor people living in the rural areas and especially for those who are not reachable. Thank you for your attention and engagement. The 10-bed ICU project is a strategic initiative to elevate the standard of critical care services at our secondary hospital through the use of advanced technology and comprehensive system strengthening measures. May I now invite Shri Shrikant Nanamuni Sir, Founder CTO Aadhar and Chairman of 10-bed ICU project to enlighten us more on this project. Good morning, everybody. Greetings to the dignitaries on the dais, the Honorable Governor of Sikkim, Sri Lakshman Prasad Acharya, the Honorable Health Minister, Sri Kunga Nima Lepcha, the Secretary Health, Dr. A.B. Karki, the Zonal Head of the HDFC Bank, Sri Kaushik Sharma, Medical Superintendent, STNM, Dr. Ruth Yonzon, and the Advisor to Health, Sri K.B. Gurung. There's also audiences out here in the auditorium as well as on YouTube, many of them globally who are attending. Welcome to this function. Firstly, it's wonderful to be here in Sikkim. It's our first visit to Sikkim. We are just loving it. For the last 3 days, we've been at the Rumtek Monastery, the Enche Monastery, the Hanuman Tok, and other places. And it's such a beautiful place. Wonderful to be here. Well, let me just put up a deck that you can see. Thank you. This, today morning we were talking about Aadhar. People were asking me about how do you build a system as large as Aadhar? Aadhar has enrolled 1.38 billion people. How many of you have an Aadhar? Raise your hand. Okay, pretty much everybody, right? How do you design a system that can encompass the entire population, right? Ensure that it works every day. It's 750 million bank accounts are linked with Aadhar so that NREGA money and various direct benefit transfers of the government of India go to the right person. 86 billion authentications. On top of Aadhar, other digital public infrastructure are layered. For instance, the UPI. Even a chaiwala today says, sir, please
put money in the UPI using my QR code. He says, don't give me cash. And within seconds it happens. And you're sending money to your family. You're paying so many different things. Today, the hotel where we are staying, I just told him to send a UPI QR code. 12.5 billion transactions every month. India is doing more payment transactions in volume than the United States, Europe, and China all put together. That's what UPI is. Another digital public infrastructure, layered the same way like Aadhaar. India scale. How do you build these? $2.5 trillion of money moving every year through UPI, right? So this is another example of a digital public infrastructure India has built. Third example, verified credentials. Your school certificates, many of you are students here, your driver's license. The Secretary Health talked about CoWIN. CoWIN also utilizes this kind of a digital public infrastructure. And how do you build these? So I had 4 points that I wrote down today morning. One is open standards. The question we want to ask today is, can we build the similar digital public infrastructure for critical care? Can we deliver critical care in Sikkim the same way we delivered Aadhaar or UPI or CoWIN? The answer is yes, and the attempt we'll talk about today as we go along. First is open standards. We have to link with other participants, whether it's Ayushman Bharat from the Government of India, Ayushman Bharat Digital Mission, or UHI, like UPI, you have Universal Health Interface. We need to be open source. We can't have proprietary systems where you cannot add new things, okay? The care software we'll talk about today is entirely in open source. You can build on top of it. Others can build on top of it, right? From globally, people are downloading it. Hence, the United Nations has called it the 50th digital public good. Layered digital systems. See, on top of identity, you can build ABA number. On top of ABA number and on top of UPI, on top of CoWIN and so on, you can build better systems. So the layering of digital public infrastructure is needed in order to deliver critical care for everybody, right? And finally, connected systems. India is largely connected. Our data availability, our cost of data is the lowest in the world, right? Mobile networks exist. 5G networks exist. So how do we take all this? So if we put all of these ideas together, we can indeed create a digital public infrastructure for critical care for everybody, right? So with that, let's see how we have constructed this 10-bed ICU project. There are 5 pillars of the project. You already saw it on the video. The first one being world-class equipment. We needed AI ventilators so that small rural hospitals, small district hospitals, even if they don't have specialists, it can auto-wean the patient based on the CO2 levels and the tidal volume. So we imported these ventilators from Switzerland because they were AI enabled, right? Our ABG auto analysis equipment, if you put a drop of blood on a little chip, it gives you the gas analysis in a matter of minutes and prints out. You don't need to go to a lab and get results back, right? This comes from Siemens, and so on and so forth. There's 26 pieces of equipment we delivered. This is world-class equipment. Next, the care software that we talked about, it's running on the cloud so that all the hospitals are connected and so that we can help people even in the smaller hospitals through technology. We'll talk a little bit about it. In fact, we today we're going to have a demo here, and in fact Dr. Gyalshing is here from the hospital, and we're actually going to show you a TeleICU demo, how it works, how all this thing comes together. So that is a segue into TeleICU. There's not enough specialist doctors in the smaller district hospitals. Not only a Sikkim problem, not only an India problem, globally this is the problem. I went to Germany, I gave the same talk, they said, we don't have enough specialists. I gave this talk in California, again, not enough specialists, right? So it's not unique to India or to Sikkim, but how do we handle it? So can doctors here at Gangtok, at STNM, help those out there through technology? That is TeleICU. We'll show you how that works. Training, comprehensive training on clinical aspects, basic life support, advanced life support, software training on care,
all of these, and medical equipment training, all these state-of-the-art equipment that we have positioned here. And lastly, community participation. Can we get the local community, the Rogi Kalyan Samitis, to actually work with these centers? These are the 5 pillars. And as you can see, these are all the equipment that we deliver. We fund this. The CapEx, the capital expenditure of the program is funded by eGov. We are raising money. People like Vinod Khosla and HDFC Bank and others donate money, and we fund this project. And on the TeleICU hub side, as you can see, the STNM Hospital here in Gangtok, where we are sitting today, is the hub. On the map you can see, and it is connected to the Namchi District Hospital, the Singtam District Hospital, Gyalshing, Mangan and Rhenock. And all of these are connected. When I say connected, they're connected through cloud software, right? And we're going to show you a demo of how all of this is going to work. This is the TeleICU hub at the STNM Hospital. Basically, they are seeing patients on monitors, on large monitors, these specialists, and they're able to talk to them, they're able to do video conversations. You will see all of this, right? Electronic medical records and so on. A ward hospital, this is at Namchi. You're seeing this is a 10-bed ICU hospital with all of these features of 5-para monitors and so on, which are connected with LAN networking out there. Of course, like I said, we train them thoroughly in medical equipment, basic and advanced life support, as well as software training. And these are all trainings that are happening here in Sikkim. I think it's happening, it happened right here at the STNM hospital. And all the doctors and nurses came here for the training. With this, let me talk a little bit about the new advances we are doing for this project. You've all heard of generative AI. You probably tried ChatGPT and so on. And we are using generative AI as well. And we'll show you how we are using this to improve critical care in our country. Firstly, we connected with the Ayushman Bharat Digital Mission. In fact, when I was the CTO of the Aadhaar project, my boss was Dr. Ram Sevak Sharma, who later became the NHA chairman. And when he was there, they worked under the Ayushman Bharat Digital Mission, ABDM. And the first thing we did was connect to the national grid on digital mission. Why? We will see shortly. Number 2, standard ICU protocols. You know, if you've read the book by Atul Gawande, the Checklist Manifesto, it talks about simple protocols that improve outcomes for patients. So can we ensure that we have standardized the protocols for the various reasons why patients come to our hospitals? Number 3, smart ICU. Existing ICUs, let's say STNM has 100 beds or 150 beds of ICUs, I don't know how many there are, and they have not used our equipment that we have provided so that the networking, all of that is smooth. But still, can we upgrade the legacy older equipment? That's a project called Smart ICU we are doing across the country. In fact, JIPMERS and others are using this system to upgrade their ICUs. Fourth, this is a very interesting project of generative AI, where we are trying to see if a nurse can take our app and ask a question on critical care when a doctor is not present. Can it give an accurate answer in local language? Okay, we're using generative AI. I'll try to show you something, a little bit about it. And lastly, we're trying to eliminate typing. Okay, when technologists say, I'm trying to help your life, doctors don't believe it. They think we are making you type more, right? This is same in India, same in America. When I talk to them, they are all like, no, we are making typists out of us. We don't have enough time to spend time with our patients. So we're trying to eliminate typing. So I'll show you all of these. On the Ayushman Bharat integration of the care software with ABDM, we are compliant on all the milestones. Milestone 1 is ABA number integration. Any person who's using our public healthcare system and even the private healthcare system soon will need an ABA number. This is the health ID of the country. We are fully integrated. You can either have an existing ABA number or create an ABA number in our system. It will work. Number 2, milestone 2 and milestone 3 are for data sharing. Let us say you're in Gangtok and you've gone to Mumbai for care. Can your records from Gangtok correctly be transmitted digitally to Mumbai, whatever hospital you go to?
It is possible today through ABDM. As long as both systems are ABDM compliant, your records through your consent, nobody can, except you, can move those records. You have to give consent and say, please move this record to hospital number 2 in Mumbai, and it will move. So we are compliant with that. So whether it's between a government system and another government hospital or between private and government, it does not matter. ABDM compliance is very, very important in the country. It's going to improve healthcare, but through consent architecture. So the privacy of the patient is preserved. The privacy bill that passed in Parliament is completely complied with. That's ABDM milestone 2 and 3. The last one, HCX, claims processing, very important. When your hospitals provide care to someone for free, can the insurance company pay you directly for that care provided? So we have made provisions in the software. This is not yet live. ABDM is still working on this. The NHA is working on this to go live, but we are compliant with claims processing as well. Next, standard ICU protocols. These are the 15 to 16 cases of shocks, septic shock, cardiogenic shock, and so on, cardiovascular, STEMI, atrial fibrillation, pulmonary cases, hepatic, neurological, and other cases. It could be snake bites and so on. We see quite a few of those in our ICUs. These are the common cases, about 15 to 16. Can we standardize these in the form of a ICU protocol? We have doctors from all our states where we work, along with our Chief Medical Officer, Dr. Padmasree Srinivasa, who sits in California. They're all working together to ensure that we can standardize the protocols so that the level of care goes up, and we can train all the doctors and nurses in all our 200 odd hospitals, right? So this is actually very interesting work and very useful work. We create large posters we put on the wards. We give these as well on training, these kind of booklets. We have not completed it. About 6 protocols have been already standardized. All these others are work in progress. So these are some snapshots of the posters of the shock protocol or septic shock protocol and so on. So these are treatment pathways. So a nurse can go, oh, my patient is here, his BP is dropping, looks like there's an infection, could be septic shock, what should I do next? And then this says, well, try vasopressors at this mg, and so on, right? So the drug dosing information is also here. Since all of this was here, and this is for STEMI, for heart attacks, ST elevation, myocardial infarction, since all of this was there, we asked the question, can we create an AI assistant for a nurse who's in a small district hospital? Maybe there's no doctor in the night, no coverage. Can we take this entire protocol and feed it into AI so AI can answer questions on this phone in her local language? We worked with OpenAI, the ones who created ChatGPT, and we have some really interesting results. Our partner is KCDH, Koita Center of Digital Health at IIT Bombay, and it is actually working quite well, but it's still in test stage. We have to thoroughly test this to ensure that there is no hallucination, if you know what I mean. Sometimes these GPTs may tell you something that is not accurate. We have to ensure that is absolutely accurate. So let's try it out. This is just a demo, a question being asked by a nurse. Oops. मेरे सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट का ब्लड शुगर 180 से ज़्यादा है इमीडिएटली क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? सेप्टिक शॉक के रोगी में उच्च रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने के लिए आप आमतौर पर इंसुलिन थेरेपी शुरू करेंगे. Okay, this is the second voice is AI talking to you in Hindi. It talks in Tamil, it talks in Punjabi, it talks in Gujarati, it talks in about half a dozen Indian languages already using AI. All we have done is told the AI, do not look at the internet, do not look at Wikipedia, don't look anywhere, only look at our syllabus we have given you and answer questions that the nurse is asking. And of course, translate into her language, the language she is asking, right? And as you can see, it can indeed do that. Of course, we have to test it a lot more to ensure that it's absolutely safe. But this is another project that we are doing. Third, like I mentioned, doctors and nurses hate it when we ask them to keep entering everything on software. All their time goes on typing. We are now asking the question, can the doctor, while doing the rounds,
Just talk to the nurse, talk to the patient, talk to the system maybe. Just normal speech, colloquial. You don't have to be formal. You don't have to say it very clearly. If you can hear what I'm saying, so can AI, right? So we built this tool called Care Scribe, which is trying to eliminate typing. As you can see, it is picking up whatever the voice signals and updating it in the electronic medical record. You can speak in Hindi, you can speak in Telugu, it does not matter. It will pick it up and update the electronic medical record in a structured way. Drop-down list, checkbox here, translation here, all of that, right? Again, this is a project we are under test. Already we have deployed in Kerala. It's working quite well in Malayalam, so we're going to try and bring it to other states as well. Third, like I mentioned, smart ICU, your existing legacy ICUs, how can we improve? The big problem there is, our standard issue is a BPL 5-para monitor. We have integrated it with a deep integration of HL7, so the data is coming through properly. What if your hospitals have Draeger? What if you have Philips? What if you have other models? How do we improve it? So what we did was, again, we used generative AI. We used GPT vision, and we captured the images because we have a camera on top of our wards. And GPT is able to convert this, as you can see, into correct information. Right? So it does not matter whether you have Draeger or whether you have Philips or whether you have some other monitor, some other company monitor, we can still work with it. Right? So this is another innovation. We are trying to upgrade existing legacy ICUs with AI. Of course, these are all the various things that we are bringing slowly so that we can actually address the issue of critical care in our country in all our hospitals, not just the top hospitals in Delhi, Bombay, Bangalore, and so on, but all the way down to our rural areas. Can we deliver care through technology? Today, I just want to mention and appreciate the donors who have come forward to help us here in Sikkim. Vinod Khosla, as was mentioned earlier, runs a very large VC firm out of California. He has donated out of the 1, 2, 3, 4, 5. He has donated money for the 3 district hospitals as well as the TeleICU hub here at STNM. I want to thank Mr. Vinod Khosla for that. Well, we have HDFC Bank, Parivartan. I used to be on the board of the HDFC Bank. In fact, both Shashi Jagdishan, the CEO, and Kaisad Barucha, the deputy CEO, they are very committed to this project. In fact, Kaisad also is the head of CSR, I believe, right now. So it's wonderful to have HDFC fund us, and they continue to fund us. And in fact, today we have Sri Kaushik Sharma here from the HDFC Bank. Thank you so much for the donation that you've made for this project. And as you can see, both the Gangtok district and the Pakyong district has been funded by the HDFC project. And also Hamilton Medical, though we pay them for the ventilators they provide, for every 2 ventilators we buy, they donate 1. So that's why they show up on this. I thank Hamilton Medical as well for their donations. Before I forget, I want to thank a number of people here in Sikkim who have been working very hard on this project. You know, one Dr. Sudeep Pradhan from the Namchi Hospital, you know, he took personal interest when we just started the project and we launched the project. And even though he's not in Namchi Hospital anymore, I see that it's admitted more than 350 patients. So we thank Dr. Sudeep Pradhan for his interest. Similarly, Dr. Sarad Hang Subba of the Gyalshing District Hospital, due to his exemplary efforts, has resulted in the hospital admitting more than 100 patients even before the program has launched today. So I thank Dr. Sarad. I want to thank Sri Rakesh Kumar Sundas, the superintendent engineer, who was the prime mover to have brought broadband connectivity. Okay, without connecting STNM to all the districts, all of this TeleICU won't work. The cloud architecture, relies on good networking. And thanks, Sri Sunil Giri, for ensuring that we have good broadband connectivity in all our hospitals.
At STNM, I want to thank Dr. Ruth Yonzon, the medical superintendent, and Dr. Suresh Madan Rasaili, assistant medical superintendent, for all the key TeleICU hub activities. See, the hub is very, very important, as you see in this architecture, because they have to help all these other hospitals, get them to do training, the clinical training that needs to happen, a roster of doctors here have to be deployed, and so on. So thank you very much, Dr. Ruth, as well as Dr. Suresh. Last but not least, I want to thank the Principal Director, Dr. Pema Sadan Lepcha, who carried the project all the way through with her dedication and proactive leadership. Thank you very much. I hope I have not missed out anybody. Okay. With that, I would like us to do a demonstration of our TeleICU hub. Well, before that, let me just very quickly talk about a little bit about our organization. This entire project is run by NGOs. It's completely philanthropic. There is no for-profit motive in any one of these. The e-government's foundation that Nandan Nilekani and I started 20 years ago. The Karuna Trust, we have Dr. Sudarshan and Venkat could not come here, but we have other people from Karuna Trust representing today. Very nice organization. Who worked strategically with us. The donors, as you saw, HDFC Bank, the Khosla Family, Crypto Relief, Give India, and so on. The partners, Hamilton Medical, Google Cloud gives a year of free access in many of our states, the Koita Center of Digital Health, PFI for the Rogi Kalyan Samitis, and People First for our interns. And our team, as you saw, Dr. Vinod Khosla, you saw Dr. Sudarshan, who runs Karuna Trust. Dr. Ram Sevak Sharma is also on our team. He's our chief mentor. He was the NHA chairman. He was the Aadhar director general. And a couple of people I want to call out. Bisoya Loitambom, she couldn't be here today. She's not well. But she's our national program coordinator and rolls out our project in every state. Chandraban Kakoti is here right now. Chandraban is our Northeast coordinator. He has worked incredibly hard to make this happen. And he does this across the entire Northeast. And you know, the other thing we are very proud of, all our state coordinators, the ones who run our states, are all women, are young ladies. And today I want to name Sarita Limbu from Gangtok. Please, Sarita has done a fantastic job, and you know, no stone unturned. Sunil Subba, who does not only the hub coordination but also the product testing. Thank you, Sunil. And lastly, I just want to say we are in currently 9 states, 206 ICU, 10-bed ICUs, about 2,000 beds, and about 13 TeleICU hubs. And we are really looking forward to working with you all. Thank you so much. With that, we'll move to the demo of the TeleICU hub with I think the Namchi Hospital today. We have with us Dr. Gyamto Bhutia, Principal Consultant Anesthesiology, STNM Hospital. He's going to actually conduct this consultation. Good afternoon, everybody. So today, I'm going to work through the project which has been discussed now. So okay, so we'll go to the Singtam district. We'll go to one of the spoke hospitals, that is this thing. So we can see the updates of the patient. The vitals can be seen out here. So can we have the summary of this thing? This all we can access by staying in the telehub. Then medicines we can see, sir. So these are the medicines the patient is having, and we can see the confirmed diagnosis of the patient also. He's got a post-traumatic hydrocephalus patient, which is undergone BP shunting. Can we have the files of the patient? So here I can see, like, I can have a view of the CT brain, and can you zoom the, okay, thank you, thank you, sir. Can we have the blood report, please? So we can zoom the blood report and have access from here itself from the telehub.
So can you have some investigation? So here you can see the different thing, like those who are below the level, the ideal level and above level. So accordingly we can interact with the doctor out there. So we're going to see the monitor view of the patient. Can we have the monitor view of the patient? So this is the live feed of the patient which is admitted in the one of the tele-hub, that is Namchi District Hospital. So this is a patient view, and can I have the face view? So here the patient, you can see patient is with the NG tube and has got tracheostomy done. So can I have this thing with you can have a doctor connect. So good afternoon, Dr. Ashim. Good afternoon, sir. It's a big day for you today, even for us. So you're in Namchi and I'm calling from TeleHub in STNM. So how's your patient doing? The patient is doing good, sir, better than before. Okay. Do you But have sir, when we are feeding the patient 300 ml 3 hourly, patient is regurgitating, sir. So what we can do? So what I would suggest, like maybe the position of the patient at the time of feeding is very important. You should at least 35 to 45 degree proper position. So during the time of feeding, I think the cuff should be inflated. That is very important. Anything else, doctor? Thank you, sir. Otherwise, patient is good, sir. I think that one you Doing have to good. be, and I would suggest you to take care of the tracheostomy tube timely. Every 2 hourly, I think it needs to be deflated cuff, or else patient might have trachomalacia and all. So frequent suctioning of the tracheostomy tube is also required. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. So as you can see, so I have a direct live streaming with the telespoke in the thing. I'm calling it from the hub, and I'm having, so this, the very advantage of this thing is that the expert in different fields can be given to the point of care that is in the periphery telespokes. So by that we can improve the trajectory of the care. So thereby, like, patients may not be referred to, so that benefit will be the patient. So this is the big advantage of the basic project. So I feel very great to be honored out here, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Gyamso and Dr. Ashim Basse. Well, with this, we end the demo, and hopefully with all these innovations, we can work and deliver better critical care to the people at Sikkim. Thank you so much. Thank you, sir, for walking us through your presentation and for the live demonstration. We have now arrived to the most awaited event of the program, that is the inauguration of the 10-bed ICU project. And to do the honors, I humbly request our Honorable Governor, sir, to kindly launch the 10-bed ICU project. Thank you, sir. I would also like to guide your attention to this screen where you can see the launch of the project taking place in Namchi, Gyalshing, Singtam, Mangan, and followed by Rhenock.
Thank you. In the next segment, we would like to felicitate various organizations and institutions in recognition of the valuable contribution made towards the 10-bed ICU project. STNM Hospital for facilitating 3 days critical care training by the 14 doctors and 5 nurse educators from STNM Hospital to the doctors and nurses from the district hospital. Namchi and Gyalshing District Hospital for treating more than 350 and 100 patients respectively in the intensive care units, and HDFC Bank for sponsoring ICU wards at Singtam and Rhenock. And to do the honors, I humbly request our Honorable Governor, Sir, to felicitate STNM Hospital, for which I would like to request Dr. Ruth Johnson, ma'am, Medical Superintendent, STNM Hospital, to receive the certificates on behalf of the doctors and the nurses of the STNM Hospital. I would also like to request Dr. S.N. Adhikari, Sir, Chief Medical Officer, Namchi District Hospital, to receive the certificate on behalf of the Namchi District Hospital. And Dr. Nim Norbu Butiak from Gyalshing District Hospital to collect the certificate on behalf of the Gyalshing District Hospital. And lastly, I would like to request our Honorable Governor, Sir, to felicitate Shri Kaushik Sharma, Zonal Head, HDFC Bank, on behalf of the HDFC Bank. Thank you, sir. I would like to request our Honorable Health Minister, Shri Kunganima Lepcha, sir, to address the audience. Good afternoon to all. महामहिम राज्यपाल महोदय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, स्वास्थ्य विभाग के एडवाइज़र श्री के.बी. गुरुंग जी, सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग श्री ए.बी. कार्की जी, श्रीकांत जी, एसडीएफसी के श्री विनोद खोसला जी लगायत जितने भी गणमान्य व्यक्ति आज यह अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं अपने तहे दिल से सभी को स्वागत करता हूं। हमारे लिए खास तौर से स्वास्थ्य विभाग के लिए या हमारे राज्य के लिए बड़े महत्वपूर्ण, बहुत ही फख्र के दिन है आज, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में जितने भी रोगी हैं उन लोगों को हम किस प्रकार से अपना सेवा पहुंचा सकें। इस क्षेत्र में कहाँ पे हम लोगों को चेंजेस लाना है, कहाँ पे हम लोगों को इम्प्रूवमेंट लाना है, इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज STNM हॉस्पिटल और हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जिला में हो अथवा और जगह पे हो, सभी हॉस्पिटल में हम लोगों ने जो कुछ यंत्र, जो कुछ इक्विपमेंट पहुंचाना है उसको पहुंचाने का कोशिश हमने किया है। आज खास तौर से हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सबसे पहले जन औषधि केंद्र वहाँ पे उन्होंने आज उद्घाटन किया। हम उनको जितने भी स्वास्थ्य विभाग के परिवार की तरफ से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए अभी जो 10 बेडेड
आईसीयू का जो यहाँ पे उद्घाटन किया, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दूर दराज में हमारे जितने भी अस्पताल हैं, जितने सीएचसी हैं, वहाँ पे जितने भी रोगी हैं, उन रोगियों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो सिक्किम में एक पहाड़ राज्य होने के चलते यातायात के यहाँ पे हमें असुविधा बहुत ज़्यादा है। यहाँ के फिर मौसम ही ऐसा है कि कई समय पहाड़ गिर जाने के कारण, लैंडस्लाइड के कारण बाधा बहुत उत्पन्न हो जाते हैं यहाँ पे। इसके चलते जिस प्रकार से हम सेवा देना चाहते हैं वो सेवा हम नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज 10 बेडेड टेली आईसीयू के हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथ से जो आज उद्घाटन हुआ, इसके माध्यम से हम जितने भी हमारे रोगी हैं दूर दराज के हॉस्पिटल में हैं, उन सभी तो हम पहुंच पाते हैं। हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी हमें सुपर स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट यहाँ पे गांतोक में हैं। गांतोक STNM हॉस्पिटल हब होने के नाते जितने भी, जैसे अभी आपने देखा वहाँ पे रेनॉक CHC में, आपके गेजिंग में, नामची में इसका जो उद्घाटन हुआ है, इसके चलते हम लोगों का यहाँ के जितने सुपर स्पेशलिस्ट जितने डॉक्टर्स हैं उनके और हमारे जितने भी डॉक्टर्स और जगह वहाँ पे जिला में है अथवा और जैसे CHC में है, उन लोगों के साथ विचार आदान प्रदान करके वहाँ पे जितने भी रोगी हैं उन रोगी का हाल जानना, रोगी की किस प्रकार की सुविधा वहाँ पे दी जा रही है, कौन सी दवाई वहाँ पे दी जा रहे हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, किस प्रकार से इनका चिकित्सा किया जाए, इस पे डायरेक्ट यहाँ पे उनके साथ आदान प्रदान करने के बाद हम लोग बहुत ही सहजता से लोगों तक पहुँच सकेंगे। इसके चलते रोगियों को वहाँ से इतने से दूर दराज जगह से यहाँ तक गांतोक तक आने की जरूरत नहीं है, यहीं से सभी को उपचार आराम से किया जा सकता है। मैं अपने ओर से हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय को, जिन्होंने आज जो कुछ भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे कार्यक्रम में यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए हम लोगों ने हमारे ओर से उनको एक नम्र निवेदन जो हम लोगों ने किया, उन्होंने सहज उसको स्वीकार करके आज यहाँ पे आए हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के स्वास्थ्य के प्रति उनका कितना ध्यान है, स्वास्थ्य के प्रति कितने मतलब कमिटमेंट कितना ज़्यादा है, ये सब इन्हीं से पता लग जाता है। आज 10 बेडेड ICU के साथ साथ हमारे 10 बेडेड आयुष का भी उद्घाटन हुआ। उन्हें वहाँ पे उद्घाटन करने के साथ साथ वहाँ पे जाकर जितने भी हमें आयुष के रोगी वहाँ पे अभी 2 महिला 2 मर्द जो वहाँ पे आज एडमिट हुए हैं, उन लोगों के साथ उन्होंने भी बातचीत भी किया, उनके हाल खबर उन्होंने पूछा। आयुष या आयुर्वेदिक प्रणाली का जो चिकित्सा है, यह हमारे भारत के परंपरा से चले आ रही ये चिकित्सा का प्रणाली है। कहते हैं, एक हम लोगों का विश्वास जैसा है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से हम अपने जो कुछ बीमार हमारे शरीर में है उसको हम जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, यह हमारे विश्वास है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका ट्रीटमेंट जितना दिन चलना है, इसका जिस प्रकार से मतलब दवाइयाँ जो लेना है, इसका कोर्स यदि आप कंप्लीट करेंगे तो आपके शरीर से जो बीमारी है वो हमेशा के लिए यहाँ से शरीर से निकल जाएगा। इस प्रकार से आप स्वस्थ रह सकेंगे। और दूसरी बात ये, आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्योंकि ये सारे हमारे जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियों के माध्यम से बनाया गया, इसलिए हम विश्वास करते हैं इनका साइड इफेक्ट नहीं रहता है। ख़ास तौर से सिक्किम के संदर्भ में हम देखें, हम सभी जानते हैं सिक्किम में मेडिसिनल हर्ब्स कि बहुत यहाँ पे बहुत ही हमारे यहाँ पे आसानी से मिल सकता है, यहाँ पे मिल जाते हैं। कई जड़ी बूटियाँ तो ऐसे हैं जो सर्टिफाइड हो चुके हैं, जिनके यहाँ पे उपयोग में लाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी यहाँ पे जड़ी बूटियाँ, कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसको हम
सर्टिफाइड तो नहीं हुआ होगा, लेकिन आम तौर से हमारे घर में हम लोग चलाते हैं। जैसे आप देखिए, चिरौटो कहते हैं, चिरौटो जिसको डायबिटिक बीमार हो उसको लेने के बाद कहते हैं डायबिटिक बीमार के लिए ये अच्छा है। दूसरा ये कहते हैं आपका आर्टिमिशिया, जिसको हम तीतेपाती कहते हैं, जहाँ पे आपका हाथ कट गया, तीतेपाती को चलाकर हम ब्लड क्लॉट करा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे एक नेपाली में इसको आप अंग्रेजी में इसको आप कहते हैं रोमेक्स नेपेलेंसिस का कहते हैं, जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो पौधा है इसको यदि आप चलाएं, इसको आप सेवन करें, तो आपके शरीर में हो सकता है 700 ऊपर कई बीमारियां इसको ठीक किया जाए। लेकिन अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है। रोमेक नेपेलेंसिस जो है उसको हलाले कुछ कहते हैं नेपाली में। इसका अभी उपयोग आपके नेपाल में और शायद ट्यूनिशिया कहाँ पे ये बहुत ही मतलब व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है वहाँ पे। हम लोग तो यहाँ पे सिक्किम में इसको तो बस केवल ऐसे झाड़-पात समझ कर पहले हम काट कर फेंक देते हैं, लेकिन अभी लोगों को पता चला कि ये जो है उसका उपयोग, ये बहुत ही उपयोगी क्या कहते हैं किस्म के पौधा है, क्योंकि उसका हम चलो उसके द्वारा कहते हैं कि हमके जो पाइल्स हैं, पाइल्स के बीमार को ठीक किया जा सकता है, और थोड़ा बहुत डायबिटिक बीमार को ठीक किया। ऐसे बहुत से हमारे यहाँ पे ऐसे औषधि युक्त पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। वैसे आप एक तो आप जानते हैं याचा गोम्पो का भी उपयोग किया जाता है, जिसको आप कहते हैं परफॉर्मेंस इन्हांस के लिए। साथ साथ कहते हैं कहीं भी आपके हड्डी वगैरह किसी कारण वहाँ पे कोई चोट लगे कुछ, इसका भी ठीक करने का मतलब ये सक्षम रखते हैं, ये कहते हैं। और इसका याचा गोम्पो किस्म बहुत ही अनेकों नाम से इसको पुकारा जाता है। इसका असली नाम है याचा गोम्पो। याचा गोम्पो का रहता है टिबेटन या सिक्किम भाषा में, भूटिया भाषा में यार का अर्थ होता है अभी ये जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन यार बोला जाता है। यारचा रेनी सीजन में आप वो देखेंगे तो इसको ग्रास जैसा लगेगा आपको। गुन का अर्थ होता है विंटर, विंटर में जब आप देखेंगे बू का अर्थ होता है वॉर्म, कैटरपिलर। सो याचा गोम्पो ये मतलब इस प्रकार के बहुत से औषधि हमें यहाँ पे मतलब सिक्किम में यहाँ पे है इसका। तो यदि शोध किया जाए इन सभी जितने भी यहाँ पे ये मेडिसिन हर्ब्स है, इसको अच्छी तरह शोध किया जाए तो हम अपने सिक्किम को आयुर्वेदिक क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी और आयुष मंत्रालय के द्वारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुष के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पिछले साल मई महीना में हम लोग वहाँ पे गुवाहाटी में गए थे, वहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी वहाँ पे सर्वनंदन सोनोवाल जी भी आए थे। इसके ऊपर बहुत वहाँ पे हमारा एक बड़े डिस्कशन भी हुआ था वहाँ पे आयुष को कैसे आगे बढ़ाना है। और सिक्किम में वैसे भी यहाँ पे आयुर्वेद के मतलब चलन नहीं, एक आप सर्वाधिक पर स्टूडेंट्स के वहाँ पे देख रहे हैं, सर्वाधिक पर टिबेटन मेडिसिन सिस्टम है, वो भी यही आपका आयुर्वेदिक उसमें चला जा रहा है वहाँ पे। और क्योंकि सिक्किम सरकार हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय और हमारे राज्यपाल महोदय द्वारा सिक्किम को स्वास्थ्य क्षेत्र में अव्वल दर्जा के राज्य बनाने का जो उनका यहाँ पे एक परिकल्पना उनके हैं, सिक्किम को स्वास्थ्य के माध्यम से सिक्किम को एक पर्यटन का स्थल बनाने का भी जो एक प्रयास है, इन्हीं प्रयासों के चलते आप सभी हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे आज चिकित्सक डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हम जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हम लोगों का एक साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर हम लोगों को सिक्किम को वास्तव में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक पर्यटन का केंद्र बनाने के और हमें चलना चाहिए। क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं सिक्किम एक छोटी सा राज्य है, हम लोगों के यहाँ पे बहुत से कंस्ट्रेंट हैं यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के माध्यम से, स्वास्थ्य पर्यटन के माध्यम से और शिक्षा प्रणाली स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटन के माध्यम से भी हम अपने सिक्किम के जो आय है, सिक्किम के जो
रेवेन्यू है इसको बढ़ाने का हम कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा मुझे यहाँ पे कुछ नहीं कहना है। आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और हमारे लिए सारे सिक्किम के लिए कहा जाए तो हमारे लिए ऐतिहासिक दिन हुआ यहाँ पे। आज जिस प्रकार से तीन चीज़ों का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है वहाँ पे हमारे महामहिम महोदय के द्वारा, ये सब ऐसे हम लोगों के अब हमारे उपलब्धि हम लोगों को मिला है। इसको किस प्रकार से चलाना है, इस प्रकार से किस प्रकार से हमको इसका मेंटेन करना है, इसको मतलब किस प्रकार से एफिशिएंटली हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है, ये आप और हम के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। मैं आप सभी लोगों से जितने भी यहाँ पे आपके डॉक्टर्स हुए, सुपर स्पेशलिस्ट और जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप, क्योंकि आप लोग का जो प्रोफेशन ही मानव सेवा के लिए बना हुआ प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए और जितने भी यहाँ पे अभी ये यहाँ पे सेवा जो आज यहाँ पे उद्घाटन किया गया, इसको ठीक प्रकार से चलाने में, इसके माध्यम से हम किस प्रकार से हम अपना सेवा मानव अन्य जितने लोग हैं उन लोगों तक बना, अन्य जितने मानव तक उन तक पहुँचाएँ, इस पर आप लोग ध्यान देकर आप काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास के साथ साथ आप लोगों ने आज तक जितने भी स्वास्थ्य क्षेत्र में आप लोगों ने इतना ध्यान देकर काम किया, स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस प्रकार सेवाएं आप लोगों ने पहुंचाए लोगों को, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ख़ास तौर से हमारे श्रीकांत जी, जिन्होंने इतना बड़ा दिल रख कर उन्होंने यहाँ पे सिक्किम में आकर एक छोटी सी राज्य जो हिमालय के गोद में बैठा हुआ है, इस राज्य को किस प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में इसको लाभ पहुंचाया जाए, ये सोचकर आप आए, आपके अन्य जितने भी यहाँ पे टीम आए हुए हैं, और खास तौर से हमारे खोसला जी जो SDFC के हैं, इन्होंने जो यहाँ पे अनुदान के माध्यम से जो यंत्र यहाँ लगाया है, उसमें आपने जो अनुदान, उसके लिए हम सिक्किम सरकार, हमारे शिक्षा विभाग, साथ सिक्किम विभाग सरकार, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको हम तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं। साथ साथ आप जिस प्रकार से सेवा पहुंचा रहे हैं, इस सेवा को और भी आगे भी इसी प्रकार से पहुंचाएं, इसका मैं आपको गुजारिश करते हुए मेरे एक दो जो शब्द मुझे यहाँ पे कहने के लिए बुलाया गया था, इसको मैं यहीं पे अंत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your valuable words and time. Next, I humbly request our Honorable Governor, sir, to kindly bless us with his words of wisdom. आज जूनी STNM अस्पताल जन औषधि केंद्र 10 बेडेड इम्पोसेंट उपचार आयुक्त आयुष अस्पताल टेली परामर्श युक्त ICU में उद्घाटन को महत्वपूर्ण अवसर में उपस्थित सिक्किम सरकार का माननीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री श्री कुंगा निमा लेप्चा जी, स्वास्थ्य विभाग का सलाहकार श्री KB गुरुंग जी, सम्मानित सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री AB कार्की जी, चेयरमैन 10 बेड ICU फाउंडिंग CTO आधार श्रीकांत नाधा मुनि जी, ग्लोबल इनोवेशन डेल टेक्नोलॉजी की हेड श्रीमती सुनीता नाधा मुनि जी, STNM अस्पताल की सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रूथ योंजन जी, SDFC को जोनल हेड श्री कौशिक शर्मा जी, STNM अस्पताल का सम्मानित स्वास्थ्य कर्मीगण, नर्सिंग कॉलेज का सम्मानित अधिकारीगण, राज्य सरकार का विभिन्न सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, आयुष विभाग का अधिकारी कर्मचारी, शिक्षार्थीगण, प्यारा दाद नानीहरू, मीडिया का साथीहरू,
तपाई सबैलाई मेरो न्याय अभिवादन। पूर्वी हिमालय को काखमा बसेको हाम्रो भारतको सबैभन्दा सानो अनि प्राकृतिक सौन्दर्यले परिपूर्ण सुन्दर राज्य, जहाँ विविध संस्कृतिले अनेकतामा एकताको सन्देश बोकेको छ। स्वच्छ, शान्ति अनि समृद्धको प्रत्येक राज्यले आज फेरि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एउटा थप खुड्किला टेको छ। आजको दिन अत्यन्त खुसीको र महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ तपाईँ सबैको उपस्थित जन औषधि केन्द्र 10 बेडेड इम्पेसेंट उपचार युक्त आयुष अस्पताल एवं 10 बेडेड टेली परामर्श युक्त आईसीयू को उद्घाटन गर्न पाउँदा मनी अति नै हर्षित भएको छ। यसका लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। यसै गरी सिक्किम सरकारद्वारा नोभेम्बर 2020 में STNM अस्पताल न्यूरोसर्जरी विभाग का स्थापना हृदय विशेषज्ञहरूको नियुक्ति गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कदम उठाएको छ। यी उपलब्धिहरू विशेष रूपले उल्लेखनीय छन् किनभने यी सुविधाहरू पहिले सिक्किममा उपलब्ध थिएनन्। यसको निम्ति राज्यदेखि बाहर गई उपचार मात्र विकल्प हुँदा रोगी परिवार दुईको निम्ति चुनौतीपूर्ण थियो। समय पैसा को अभावले कतिपय मानिसहरूको कष्ट भोगे। आज अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा हाम्रो राज्यमा रोगीहरूको व्यापक उपचार प्रदान गरिँदैछ। यसका निम्ति राज्य सरकार, टेक्नोक्रेट, स्वास्थ्य विभाग एवं यसमा लागि परेका सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। यो क्षण हाम्रा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली को माध्यमले हाम्रो समुदाय को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण माइटो खुट्टी हो। आयुष मंत्रालय द्वारा 2014 देखि राज्यहरूको माध्यमले सुचारू कार्यान्वयन को निम्ति राष्ट्रीय आयुष मिशन को गठनले स्वास्थ्य को क्षेत्रमा विकास खोला बगिरहेको छ। प्यारे साथियों, मुझसे पहले सबने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करी। अब मैं बहुत देर से सोच रहा था आखिर से सब तो बातें कह लिया, अब मैं ऐसी कौन सी बात कहूं जो आपको सुनने लायक हो। तो मुझे लगता है कुछ बचा नहीं, सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है। हम बहुत कुछ जान जाते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, बोल लेते हैं। जानना, जीना, बोलना तो हम बहुत आसानी से जान लेते हैं, लेकिन जब उस पर सीखने की बात हो, सीख करके जब उस पर चलने की बात होती है, तो वहाँ हमारे जीवन में एक संकल्प की आवश्यकता होती है। हम जान तो लेते हैं, लेकिन उस पर हम चलने का संकल्प कैसे लें, आज इस पर ज़रूर विचार करना होता है। क्योंकि बहुत पहले से शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए देश का मूल मंत्र रहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख न होवे, किसी को कोई परेशानी न होवे, किसी को कोई कष्ट न हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहे, इस देश का मूल मंत्र रहा है। मूल मंत्र को पढ़ने मात्र से तो हम नहीं चल पाएंगे, लेकिन उस रास्ते पर चलना होगा। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की चाहत हमारी पुरानी, जितनी मानव अस्तित्व की स्वास्थ्य सेवाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, व्यवस्था में समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों की चिंता करते हुए सस्ती और उचित सेवाएं प्रदान करना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना हमारी प्राचीन शिक्षा
और चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को बढ़ावा देने का कार्य अभी पिछले 1 दशकों से और गति पकड़ी हुई है। नामची एवं रेनोक में पूर्ण रूप से संचालित गेजिंग केंद्र का उद्घाटन, देनताम और सोरेंग स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य की प्रगति का अंतिम चरण में होना निश्चित रूप से सिक्किम सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के संकल्पों को दर्शाती है। मैंने अपने सिक्किम के 6 जिलों के भ्रमण के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया था कि हर स्वास्थ्य केंद्र में वो सभी सुविधाएं हो और जन औषधि केंद्र हो और उनकी बेहतर चिकित्सा हो। इस पर हमने ज़रूर वार्ता किया था। इसी प्रकार आज यहाँ 10 बिस्तर वाला आयुष अस्पताल का उद्घाटन सिक्किम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक केवल ओपीडी से परामर्श किया जा रहा था, लेकिन रोगियों को भर्ती का उपचार सुविधा प्रदान करना यह भी एक मील का पत्थर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के माध्यम से हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति पुनः लोकप्रियता हासिल कर रही है और लोगों के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गई है। हमारे राज्य में आयुष क्षेत्र का विस्तार प्राचीन चिकित्सा पद्धति को और प्रोत्साहन देना और देगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सिक्किम न केवल प्राकृतिक तौर पर सुंदर है, बल्कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों की समृद्ध भूमि है। यहाँ पर आयुर्वेद के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। हमारा राज्य हेल्थ टूरिज्म का हब बनने में सक्षम है, जिससे उपचार के साथ साथ रोजगार के कई अवसर प्राप्त होंगे। लोग आज केरला, हरिद्वार प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बड़ी कीमत चुकाकर इलाज के लिए जाते हैं। हमारे राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बढ़ावा देना देश विदेश की पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा और अधिक प्रयास करने होंगे। इस सुविधा के साथ लोगों को सर्वोत्तम पंचकर्म, शिरोधारा जैसी सुविधाएं प्राप्त हो, जिसका लाभ रोगियों तक पहुंचेगा। माना जाता है कि बौद्ध काल में गौतम बुद्ध का इलाज करने वाले प्रसिद्ध सर्जन जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेद का अध्ययन किया। इसलिए यह चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन चिकित्सा प्रणाली, उन महान विचारकों की देन की जो एक लंबे और अद्वितीय सांस्कृतिक इतिहास के साथ साथ स्वस्थ जीवन जीने की कला का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए हम पुनः अपने प्राचीन गौरव को पुनर्मूल्यांकन कर पुनर्जागरण के माध्यम से पुनर्जीवित करें। सोवा रिक्पा होम्योपैथ योग आयुर्वेद को बढ़ावा दें। आज का कार्यक्रम राज्य के चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। आज स्वास्थ्य देखभाल के लिए एआई संचालित वेंटिलेटर जैसी अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर 10 बेड आईसीयू प्रोजेक्ट सिक्किम के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो वास्तव में रोगियों की एक ज़रूरतों के अनुकूल है। गंगटोक से विशेषज्ञ एवं जिला अस्पतालों में प्रशिक्षित मेडिकल ऑफिसर के समन्वय के साथ टेली परामर्श के माध्यम से उन रोगियों का उपचार करना जो गंगटोक आने में असमर्थ हैं, वाकई बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही सराहनीय कार्य है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति से परे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो। मुझे पूर्ण विश्वास है यह परियोजना बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 10 बेड आईसीयू के परिवर्तनकाली पहल के लिए मैं श्रीकांत नाथमुनि और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई करता हूं। मैं एचडीएफसी बैंक के श्री विनोद खोसला जी को भी बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने सहयोग के माध्यम से सिक्किम के प्रत्येक नागरिक को सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे उनके जीवन में खुशियां छाई। मेरे बड़ी संख्या में मेरे विद्यार्थी भी सामने बैठे हैं और चिकित्सा क्षेत्र से लोग बैठे हुए हैं। ये सभी जानते हैं कि आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में सर्वाधिक चिकित्सक देने वाला अगर कोई एक देश है तो वह भारतवर्ष है। भारतवर्ष के अंदर इतनी मेधा है, इतना ज्ञान है, इतना उनके अंदर कुछ करने का संकल्प है। आज यही कारण है कि हिंदुस्तान के चिकित्सक, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, रूस हो, अनेक दुनिया के तमाम विकसित देशों में भी
सर्वाधिक अगर कोई लोकप्रिय चिकित्सक हो रहे हैं और हर क्षेत्र में चिकित्सा काम दे रहे हैं तो हिंदुस्तान के डॉक्टर जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की सेवा, अभी मुझे ऐसा देखा कि हमारे चल कर के बेंगलोर से चल आकर के और आकर के हमारे सिक्किम के उन जगह पर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ दूर बैठे हुए लोगों को बीच में भी उनको चिकित्सा मिले, उनको जीने का हक मिले। एक नई क्रांति देश में सोच की बनी है। आज यही कारण है कि दुनिया के लोग हमारे देश की ओर देख रहे हैं। अभी हमारे HDFC बैंक के शर्मा जी ने भी बात बताया, उन्होंने जिए तो औरों के लिए, जिए तो देश के लिए, जिए तो समाज के लिए। अपने के लिए तो बहुत सौ लोग जीते हैं, लेकिन समाज के लिए जीना, समाज के लिए संकल्प लेना, इस जीवन की शक्ति रही है। महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। हम कभी कभी समय दान देने में हमें कठिनाइयां होती है, लेकिन हम कुछ नया करते, उसी में कुछ अच्छे करने वाले लोग हैं। हम लोग तो कभी गीत गाते हैं कि वहाँ दीपक जलाएं जहाँ अभी अंधेरा है, जहाँ प्रकाश की आवश्यकता है। एक सोच हमारे अंदर एक बदलाव ला देती है। आज हिंदुस्तान में तो एक वाइब्रेंट गांव में गया था, और जो हमारे सीमावर्ती गांव है, समयावर्ती गांव के लोगों से मैं मिला। हमने कहा आप कैसा अनुभव करते हैं? कह पहले तो मैं कठिनाई महसूस करता था कि मैं देश का अंतिम छोर पे बैठा हूँ, देश के बिल्कुल किनारे हूँ, अंतिम गांव हूँ। लेकिन आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब देश के आप अंतिम गांव नहीं हैं। जहाँ सूरज का प्रकाश सबसे पहले उगता है, वहाँ विकास का भी प्रकाश सबसे पहले जाएगा। आप अंतिम गांव नहीं, अब आप पहले गांव हो चुके हैं। एक छोटी सी सोच ने जीवन में परिवर्तन ला दिया, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर दिया। अभी NAC की बैठक हुई थी हमारे शिलोंग में। हमारे NAC के अध्यक्ष है भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हमारे 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इकट्ठे थे। सब ने एक संकल्प लिया कि हमारे विकसित, हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो इतने वर्षों तक भगवान सूर्य के प्रकाश के बाद भी विकास के अंधेरे में पड़े थे, वहाँ सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा, जीने का आधार, वो सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन आज खुशी है कि उस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी हमारे माननीय नाथा मुनि जी पधारे, मैंने भी बातचीत किया कि बेंगलोर से, और आपने भी कहा तमाम ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है, ICU में मरीज पड़ा हुआ है, डॉक्टर एक दूसरे से बड़े अस्पताल से जा रहे हैं, रास्ते में फंस गए, उसका जीवन कठिन पड़ा हुआ है। लेकिन इसके बारे में भी सोचना है कि उनके जीवन को कैसे बचा सकते हैं। एक सोच बनाया, हम मनुष्य, हम जीने का कितना अवसर किसी को दे सकते हैं, दूसरों के लिए कितना जी सकते हैं, और संकल्प चाहिए। इस समय हम आज़ादी के अमृत काल में चल रहे हैं। एक विकसित भारत, समृद्ध भारत, संपूर्ण भारत, एक समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, अनेक क्षेत्रों में हमारी आत्मनिर्भरता होना चाहिए। पराधीन सुख सपने होना ही, दूसरे के अधीन हम रह करके सुख की कल्पना नहीं कर सकते। और इसके लिए हमारी जीवन पद्धति रही है। पहले तमाम हमारे जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उन विश्वविद्यालयों में तमाम प्रकार की जो अन्य शिक्षाएं होती थी, उसमें औषधि चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। लेकिन कालांतर में जब हम गुलाम हो गए तो सबसे पहले जिसके कारण हम दुनिया में एक ताकतवर देश थे, हमारी पहचान थी, हर व्यक्ति भारत को आना चाहता था। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, अनेक विश्वविद्यालय थे, लोग भारत की ओर देखना चाहते थे। स्वास्थ्य के दृष्टि से भी भारत आना चाहते थे, क्योंकि यहाँ की प्रकृति, यहाँ की जलवायु, यहाँ ओम देव शांति, यहाँ वनस्पतियों की शांति, तमाम प्रकृति की पूजा होती थी। और प्रकृति की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, बेटियों की पूजा होती है, सम्मान होता है। मैं समझ सकता हूँ कि सिक्किम से अच्छा उदाहरण कहाँ हो सकता है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है। बाहर के लोग आते थे, कहते कि हमारे सिक्किम में जहाँ प्रकृति मुस्कुराती है, जहाँ प्रकृति मुस्कुराएगी, वहाँ जीवन मुस्कुराएगा, वहाँ स्वास्थ्य मुस्कुराएगा, सबको समृद्धि होगी। और आज यही कारण है कि एक आदर्श, लेकिन बीच में गुलामी के काल में हम थोड़ा आत्मविस्मृति में चले गए थे।
फिर से उस ओर भारत लौट रहा है, उस भारत लौट रहा है। हर क्षेत्र में हम विकसित हो रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। मैं तो एक उदाहरण, मैं तो मेरे जीवन का अपना खुद का अनुभव हुआ। अभी 16 तारीख से 18 तक हमारे राजभवन में एक संकल्प राजभवन के सब लोगों ने लिया मिल करके, क्योंकि टीम काम करती है। कोई कहे कि मैं अकेले करता हूँ, ऐसा मैं नहीं मानता। एक टीम काम करती है, कोई एक अगुवाई करने वाला होना चाहिए। मैंने कहा और कुछ नया करते हैं, तो वहाँ हुआ कि हमरो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम। तो विकसित भारत तो में और हम क्या कर सकते हैं, युवा देश के सपना देखता है, उसके भी बहुत सारे कल्पनाएं हैं, उसके बहुत सारा आइडियाज रखता है। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं ये क्या सोच सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन युवाओं के सपने, इनके मन में 2047 कैसा होगा, हर क्षेत्र में इसकी कैसी आत्मनिर्भरता होगी, यह देश के लिए क्या बनाना चाहता है, देश को कैसा देखना चाहता है, इसके सपने को संजोने की आवश्यकता है, इसके आइडियाज़ को लेने की ज़रूरत है। उन आइडियाज़ को कलेक्ट करके भेजो, और जिस प्रकार से सुंदर आइडिया बनते हैं वैसा देश बनना चाहिए। और उसी दिशा में हमने एक विकसित भारत पुष्पित संकल्प, हमरो संकल्प विकसित भारत पुष्पित संकल्प लिया। और क्या करते हैं, पुष्पित सिक्किम तो क्या हो सकता है। चलो भाई, सब बहुत बड़े सुंदर सुंदर यहाँ फूल खिलते हैं। मेरे राजभवन के लोगों ने कहा कि अभी हमारे यहाँ बहुत सारे फूल तो हैं, लेकिन कश्मीर में वो ट्यूलिप खिलता है, यहाँ नहीं खिल सकता। कुछ ने कहा यहाँ का वेदर ठीक नहीं, वहाँ का थोड़ा प्रकृति वहाँ का कुछ अलग प्रकार का है। सब ने संकल्प लिया। हमारे साथ बैठे हैं लोग, जो लोग उसकी अगुवाई भी किए, उस टीम के तमाम नोडल बने, तमाम जिम्मेदारियाँ दिया, और वो खुद यहाँ से लेके कभी सिलीगुड़ी कभी दिल्ली यहाँ वहाँ संपर्क किया, उन लोगों से संपर्क बनाया। आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ, एक संकल्प था और संकल्प में सिद्धि है। कहा चाहे जैसे भी हम ट्यूलिप तो खिलाएंगे अपने सिक्किम में। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ राजभवन में, आओ आज सिक्किम में आपके हमारा ट्यूलिप खिल चुका है और वहाँ लोग आके देख रहे हैं। संकल्प में शक्ति होती है। हम तय कर लें कि हम अपने इस जो 10 बेड आईसीयू का हमने टेली व्यवस्था करी है, उसके माध्यम से हम अपने पूरे सिक्किम को स्वस्थ करेंगे, वहाँ तक वो स्वास्थ्य चिकित्सा पहुँचाएंगे। हम उस दिशा में आत्मनिर्भर होंगे। अभी आयुष की दृष्टि से बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम तय कर ले कि हमारे सिक्किम में वो सब कुछ, हमें तो केरला भी जाने का मौका मिला है। मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने अपने आयुर्वेद के उस आयुष क्षेत्र में गया जहाँ सिरोधारा से लेकर के और तमाम पंचकर्मा का बेड वगैरह देखा, और भी देश के अनेक हिस्सों में जाने का मौका मिला है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने आयुष के लोगों को भी। एक सुंदर सा वहाँ पर आयुष सेंटर ऊपर हमारे यहाँ स्थापित हुआ है। और ये कह सकता हूँ बाकी राज्य में कभी गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, हमारे यहाँ तो 12 महीने मौसम बहुत अच्छा रहता है। प्रकृति जितना प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, आयुष चिकित्सा के लिए जो एक माहौल चाहिए, जो प्रकृति का वरदान चाहिए, वो हमारे सिक्किम से अच्छा और किसी राज्य को नहीं हो सकता है। इसका लाभ उठाते हैं, हमें इसका लाभ लेना चाहिए। दूसरे राज्यों से लोग आएँ और कहें कि चलो 10 दिन के लिए चलते हैं, सिक्किम में रुकते हैं और सिक्किम में आयुष चिकित्सा लेते हैं। इस प्रकार के आत्मविश्वास के साथ हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। आज ये जन औषधि को लेकर के भी मुझे खुशी है कि हम पिछले वर्ष इसी सभागार में एक चर्चा किए थे कि जन औषधि केंद्र, गरीब को भी जीने का हक है जी, गरीब को भी जीने का हक है, गरीब को भी स्वस्थ रहने का हक है, गरीब को भी अच्छा कपड़ा पहनने का हक है, गरीब को भी घूमने का हक है, गरीब को भी खुशियाँ और त्यौहार और उत्सव मनाने का हक है। उसके त्यौहार मनाने में, उसको स्वस्थ रखने में, उसके मुस्कुराने में हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसको जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। हम मानव जन्म पाए हैं, दूसरों के लिए भी जीने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। हम सबका सौभाग्य, आप सबका सौभाग्य, आप ऐसे क्षेत्र को जहाँ मनुष्य के जीवन में आप मुस्कुराहट ला सकते हो। लोग कहते भी हैं चाहे जितनी पैथी चला दो जी, सिंपैथी नहीं चलाओगे तो बात अधूरी रहेगी। इस नाते सिंपैथी के साथ चिकित्सा को आगे बढ़ा दो, आपका जीवन यश से भर जाएगा, आपका जीवन यश से भर जाएगा। जीवन पूरा, वरना संसार में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमने मानव के लिए और मानवता के लिए क्या किया है। मैं मंच पर बैठे जब अभी हमारे बहुत अच्छा
नाधा मुनि जी अपना स्पीच दे रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि वहाँ से चल करके और हमारे लिए आए हैं। हम औरों के लिए कितना 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं, हम बढ़े तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी। मैं एक बार फिर से अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत बधाई करता हूँ कि उनके स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके इस कार्यकाल में अनेक प्रकार का स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। मैं बहुत बहुत स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई दे रहा हूँ। इस STNM हॉस्पिटल में विविध क्षेत्रों में हमारी चिकित्सा क्षेत्र एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मैं बधाई करता हूँ। एक ज़रूर आह्वान करना चाहता हूँ, यदि अगर ट्यूलिप के फूल अगर हमारे सिक्किम में खिल सकते हैं तो हम ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारे राज्य से हम वो सभी चिकित्सा यहाँ देंगे जो सिलीगुड़ी और अन्य क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। हम हर क्षेत्र में अपने लोगों को पूरी चिकित्सा दे करके यहाँ पर स्वस्थ रखेंगे। यही संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ें। एक बार फिर से बहुत सारी उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय भारत, जय सिक्किम। Thank you, Honorable Governor Sir, for blessing this occasion with your presence and also for your kind words. As John F. Kennedy has said, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. With this note, I would like to invite Dr. Ruth Yonson Ma'am, Medical Superintendent, STNM Hospital, Department of Health and Family Welfare, Government of Sikkim, to kindly propose the vote of thanks. Good afternoon to all. It is with great honor and privilege on this memorable occasion that I thank the Honorable Governor Sir, Sri Lakshman Prasad Acharya Ji, Honorable Minister Health, Sri Kunga Nema Lepcha Sir, respected Advisor Health, Sri K.B. Gurung, and Secretary to Health and Family Welfare, Dr. K.B. Karki, Srikant Nadamuni, Chairman, 10-bed ICU and founding CTO Aadhar, Srimati Sunita Nadamuni, Global Head, Dell Innovation, Sri Kausik Sharma, Journal Head, SDFC Bank, and other dignitaries on the stage, friends from Sikkim Health Community, STNM Family, 10-bed ICU team, and personnel from media. The launch of 10-bed event symbolizes our collective belief that something as precious as access to critical care must be viewed as a right. A person, irrespective of social category, gender, age, or location, should have a similar chance of receiving life-saving services. We believe that a person in Namchi or New Delhi, in Mangan or Mumbai, in Gyalshing or Gangtok, should have similar access to critical care services. We are deeply privileged to have been blessed with the presence of Honorable Governor. Sir, your presence not only adds prestige to this event, but also underscores the importance of initiatives and discussions that have taken place here today. On behalf of STNM, I extend my heartfelt gratitude to you, sir, for gracing us with your presence and making this event a grand success. Thank you, our Honorable Health Minister, for believing in the project and offering boundless support. The 10-bed ICU initiative is blessed to emerge as a development community, a platform facilitating technology and social interactions, a moment with the potential to transform public health infrastructure. None of this would have been achievable without the collaboration of change makers from various sectors, their selfless contributions, and the unwavering support of the state government. I thank our health department for bringing this initiative to Sikkim. Thank you, Dr. A.B. Kaki, our health secretary, for exemplary energy, proactiveness, and always leading from the front. Thank you, advisors, sir, for your presence and believing in the project. Thank you to the donors,
Mr. Khosla, and SDFC Bank for the generous donation. Thank you, Mr. Srikant Nadamuni, for his vision and bringing everyone together to make 10-bed ICU a reality. The team, including Mr. Chandraban Kakote, Northeast Coordinator, Mr. Mrityunjoy Nath, Ms. Sarita Limbu, State Coordinator, Sunil Subba, Hub Coordinator. Through the project, we are also witnessing the voluntary collaboration of doctors and experts from technology and health domains to ensure affordable and quality care. I thank our STNM doctors who will be playing a central role in making the project a success. Thank you for conducting the clinical training, and I am sure you will continue to lead from the front. Thank you, Dr. Pema, our Principal Director, for seeing merit and advocating the 10-bed ICU project. I would like to thank the Principal Directors, senior officials from the head office and districts, doctors and nurses in the district hospitals, State Nodal Officer IUs, AMS, STNM HODs, Nursing Superintendent, DNS, ANS, and students for their presence. I would also like to thank the engineering cell, AD Sanitation and team, ward masters, security, for successfully organizing the event. Thank you everyone for being the integral part of 10-bed ICU initiative. Kindly excuse me if I have missed anyone. Thank you to the media personnel for covering the event. With this, I would once again thank Honorable Governor Sir for gracing the occasion and sharing your vision with us for the reason. We promise to keep our best effort into translating this vision into practice. Thank you. Thank you, ma'am. We have now come to the end of today's program, and before we take our leave, once again, we would like to extend our heartfelt gratitude for your presence, and I would like to request everyone to stand up for the national anthem. Thank you all. I would like to request our team to kindly escort our chief guest and dignitaries on the dais for high tea. And for the esteemed guests, staff, and everyone seated among the audience, I would like to request you all to join us for lunch, which is being served outside the auditorium. I would like to request the nurses from the district and Sawa Rigpa students to proceed first for the lunch, followed by the students of Sikkim Government College of Nursing. Thank you all.